बहुत बहुत स्वागत है. Ladies and gentlemen, esteemed guests, a very very warm welcome on the 10th National Conference on Disability. ये जो 10वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है डिसेबिलिटी के लिए, इसमें 3 संस्थाएं मिल करके अपना योगदान दे रही हैं. There are 3 organizations which have come together to initiate this conference, and we are grateful to all 3 of them for progressing, for forwarding, for ensuring that the cause of disability moves from strength to strength, ensuring that every person with disability lives a life of dignity and lives a life of independence. Sarthak Educational Trust, the Department of Empowerment of Persons with Disability, and National Abilympics Association of India. Their collaboration, their collaborative effort and collective commitment has ensured that no Divyangjan in this Bharat who has a will, who has a determination, who has a grit to change his or her life cannot do so. So let me welcome all of you once again to the 10th National Conference. एक सरल सा संस्कृत का श्लोक मुझे इस समय याद आता है, उससे मैं इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन या शुरुआत करूंगा. ये संस्कृत का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. द श्लोक सेज, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो मनोषधम, नास्ति मूलो मनोषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ. व्हाट डज दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? बड़ा सरल सा है. ईश्वर ने जिसको भी इस पृथ्वी पर भेजा है, उस मनुष्य की कहीं ना कहीं योग्यता है. ये ले हम कैसे कह सकते हैं? There is no letter in Sanskrit language from where a mantra cannot start. There is no vegetation, कोई भी ऐसा पेड़ फल फूल प्रकृति में नहीं है जिसकी औषधि नहीं बन सकती. Thing which cannot be used as a medicinal value, which does not has a medicinal value. Similarly, there is no person on this planet who does not have capability and be useful to someone else. What is needed is yojak, enabler. Sarthak, Nai, Department of Persons with Disability, these are the enablers. These are the enablers which are enabling the cause of persons with disability, Divyangjan, and making sure that they contribute towards the Rashtra, towards the economic progress of the country, and towards the progress of their household. We gather today here, both physically and virtually, to illuminate the path to an inclusive, accessible, and sustainable world through the prism of global partnerships. Before we talk about the enriching journey, let's take a moment to recognize the profound significance of our presence here. The 10th National Conference stands as a testament to synergy of efforts, resounding testament of the spirit of collaboration that brings us together. The conference transcends boundaries, unifying diverse stakeholders, including government bodies, corporate entities, academia, NGOs, disabled persons organizations, media, individuals who have shared the vision of fostering a world
that truly embraces everyone. So creating an inclusive world is the focus of this conference. Our themes and our discussions are dynamic, covering spectrum of topics that hold immense relevance in our pursuit of a more equitable society, from skill development and financial empowerment to government initiatives, media representation, innovative technologies. Each panel, we have multiple panels in next 2 days. और ये दोनों दिन जो यहाँ पे वक्ता आएंगे वो आपको ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे जिसको अगर आपने एब्जॉर्ब किया तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके तकदीर में बदलाव आ सकता है. In the heart of this event, the North Zone Regional Abilympics unveil the exceptional skills of our participants. While the exhibition showcases pioneering assistive devices and technological solutions that epitomizes fusion of innovation and accessibility. इस कॉन्फ्रेंस के साथ 3 और गंतव्य चल रहे हैं. एक, हमारा GRC रेडी है जिसका इनॉग्रेशन कल होगा. दूसरा, नेशनल एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें अभी जस्ट कुछ महीने पहले भारत ने 8 पदक जीते थे और हमारा गंतव्य है कि 4 साल के पश्चात जब फिनलैंड में होगा तो हम और बहुत सारे पदक जीते. उसके लिए नॉर्थ जोन का रीजनल एबिलिम्पिक्स भी साथ में चल रहा है. मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप वहां के प्रतिनिधि और वहां के प्रतियोगिताओं के साथ जाकर के उनका हौसला बुलंद करें. और तीसरा, there's an exhibition which is going on which showcases multiple assistive devices. बहुत सारी ऐसी तकनीकें, बहुत सारी ऐसे यंत्र तंत्र हैं जो आपको मदद करेंगे कि आपका लाइफ और आपकी एक्सप्रेशन सुचारू रूप से चल सके. तो इस कॉन्फ्रेंस के बियॉन्ड आप तीनों जगह अपना प्रेजेंस जरूर मार्क करें और उसका फायदा लें. We will engage in questions, we will engage in queries, we will engage in solutions. तो आपके कोई प्रश्न है, आपका कोई समस्या है तो पूछें, क्योंकि यहां पे पैनलिस्ट आपके लिए आए हैं, यहां पे जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो पर्सपेक्टिव आपके लिए आपको देना चाहते हैं. सो इसलिए आप प्रश्न पूछें और आपको उनका जवाब मिलेगा. Ladies and gentlemen, the stage is set. We will start on this remarkable 2-day journey where we have brought the best minds across all segments, all sectors, ensuring that we create a better world, we create an inclusive world, we create an independent world for the Divyangjan. So with this, I call upon our host, our moderator, Shri Atul Bhatnagar ji, who is the former Chief Operating Officer of NSDC, National Skill Development Corporation. Atul ji is a seasoned professional, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और वो हमारा पहला पैनल मॉडरेट करेंगे which talks about skill, financial empowerment and excellence. Atul ji, most welcome, sir. Thank you, Siddharth. Good morning to you all. और हम बाय द वे मैं ये बता दूं कि हम लोग YouTube पे भी लाइव हैं और Facebook, Instagram, मीडिया चैनल्स पे भी हम लोग लाइव हैं. और मैं चाहूँगा कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करें और आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो उसके आखिर में पूछेंगे. आपको काफ़ी समय मिलेगा क्वेश्चंस पूछने का. और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बड़े ही वेरीड लोगों से आए हैं. हमारे पास अमेज़ॉन से हैं, इंडिगो से हैं, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस रिटेल, आपका कलरी स्कूल्स,
एक फिल्म मेकर भी हैं और पीवीआर सिनेमा वाले भी यहाँ पे हैं, तो उन सब से हमारी बात होगी। मैं इन सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनका जो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है वो उस समय करूँगा जब उनसे कोई प्रश्न पूछें। तो इसके साथ ही मैं शुरू करना चाहता हूँ। हमारा पैनल जो है उसका फोकस रहेगा स्किल, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड एक्सीलेंस। तो पहले मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे मधुबाला शर्मा जी से। मैडम इनको जरा सपोर्ट भी कर देंगे। एंड संगीता रॉबिन्सन जी, आप भी साथ में आ जाइए, दोनों साथ आ जाएंगे। Welcome, ma'am. Please, can you take them through? Good morning and come. बानी खुराना, रिलायंस रिटेल से, आइए मैम। मेजर दिनेश शर्मा, वेलकम सर। राकेश प्रसाद, प्लीज, फ्रॉम इंडिगो। प्रताप सिंह, and Mr. Vijay Jodha, he will be joining us on through digital means. So, so let me start with जो एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं कल को, ग्लोबल रिसोर्स सेंटर। ग्लोबल रिसोर्स सेंटर का जो हमारा मकसद है वो है कि दिव्यांगजन के लिए एक ऐसा कोई स्थान पे, लेट्स से बिल्डिंग, जहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जहाँ पे जो भी जिस तरह का नया जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, चाहे असिस्टेड डिवाइसेस की बात हो रही हो या किस तरह का एलएमएस बन रहा हो, इन सब का इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिले, वो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर है। वहाँ पे रिसर्च भी होगी, रिसर्च के बारे में, और बाहर जैसे इंडिया से बाहर से कोई किसी तरह का कुछ नया कोई असिस्टेड डिवाइस बना है और वो इंडिया में टेस्टिंग होनी है, वो भी वहीं से शुरू होगा। सब दिव्यांगजनों के लिए वो एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जो पहले कभी था नहीं, और इंडिया में शायद ये पहली बार होगा। उसका इनॉग्रेशन कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री धनखड़ जी करने वाले हैं। नाउ इस ग्लोबल रिसोर्स सेंटर को बनाने में बहुत लोगों का वक्त लगा, पैसे भी बहुत इकट्ठे करने पड़े, खर्च भी किए, और उसमें मैं चाहता हूं कि पहले मेंशन मैं करना चाहता हूं कि अमेज़ॉन को आज रिप्रेजेंट कर रही हैं मधुबाला शर्मा जी, और मधुबाला शर्मा जी 100% ब्लाइंड हैं सिंस बर्थ, एंड वो सॉल्यूशंस निकालती हैं इंडिपेंडेंट लिविंग का। उन्होंने अपने व्यूज़ को नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में प्रेजेंट किया है। उन्होंने एक पेपर लिखा है, डिसेबिलिटी डज इट हैम्पर एबिलिटी, at the 32nd CSUN conference. Then accessibility and disability, a view from the APAC region, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में क्या इसके बारे में बात हो चुकी है, और वो टीवी कमर्शियल में भी आ चुकी हैं सैवलॉन ब्रेल पे। और मधु जी इज़ अ रोल मॉडल एंड हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ अमेज़ॉन को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अमेज़ॉन ने ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के लिए सबसे बड़ी राशि दी गई, उनकी तरफ से आई, उन्होंने सबसे बड़ा डोनेशन उनका था, तो लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। Madhu ji, first of all, I want to thank your organization for the magnanimous support given to Sarthak.
in the making of the Global Resource Center. It will be inaugurated tomorrow, as I mentioned. Not only that, Sarthak trainees who have joined Amazon over the years, they have sung praises about the culture. Now I understand why. You have a leader who's a role model. So you are there to find solutions for independent living. We need to learn from you, and so do our audience here. Please share practical ways by which Divyangs can work in corporate scenarios and utilize their abilities to make a career. Over to you, Madhuji. Thank you so much for such a warm welcome. और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, बहुत glad, I'm really glad and I'm proud of being associated with Sarthak and being associated with Amazon. So सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी. और जो आपका सवाल है ये बहुत ही interesting है क्योंकि बात बहुत होती है, right? और बात इतनी होती है कि कई बार बातें ही होती रहती हैं. तो प्रैक्टिकल एडवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है. अब फाइनेंशियल जो हमारे पैनल का टॉपिक है वही बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लाएं, और वही बहुत ज़रूरी है. हम सोसाइटी में जब जीते हैं तो एक सोसाइटी डिसेबल्ड लोगों की और एक सोसाइटी नॉन डिसेबल्ड लोगों की. अभी तक हम ऐसे जीते हैं और हम ऐसे जीते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना है. We need to do something for them. What does that mean? We are different and they are different. And that's where one gap comes in. So the practical suggestion to bridge that gap is, first of all, identify that it makes business sense, it makes practical sense to view all of us as one society, as a whole, one indivisible whole. तो पहली तो मेरी ये suggestion है कि हम आप ना करके हम सब पे हम आ पाएं. तो जो solutions हम नॉन डिसेबल्ड लोगों के लिए निकालते हैं वही सॉल्यूशंस हम डिसेबल्ड लोगों के लिए भी निकाल पाएंगे. दूसरी सलाह मेरी ये है कि कॉर्पोरेट रेडी बनाने के लिए, और ये डिसेबल्ड लोगों के लिए भी जाता है, एक तो अपना कॉन्फिडेंस कहीं अंडरग्राउंड नहीं जाने देना. उसकी जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो पोटैटो की तरह अंडरग्राउंड नहीं उगता है. खुश रहना है और अपनी स्किल्स को पहचानना है, परखना है. किसी को भी अपने स्किल्स, अपने कॉन्फिडेंस को नीचे लाने नहीं देना. और कई बार हमारी ग्रूमिंग नहीं हो पाती है क्योंकि हम कई बार स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं और नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ मिक्स नहीं होते हैं. तो दूसरी मेरी प्रैक्टिकल सजेशन ये रहेगी कि अपनी स्किलिंग पे हम फोकस करें. ट्रेन एंड हायर मॉडल्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो कॉर्पोरेट्स अगर इस जर्नी में जुड़ सकते हैं. दोज ऑफ यू कैन collaborate and do focus on train and hire. Train people with disabilities on the skills that you're looking for. Do not lower the bar. काम हमने कम नहीं expect करना है. Do not lower the bar, but train them to meet the bar and work on the areas where they may not have got an opportunity to learn, whether it is communication skills, which may have been impacted because of a limited exposure, if I can put it that way. And that can really, really help us bridge the gap in a big way. So that's my initial thoughts. Thank you very much, Madhuji. That was really enlightening to understand about your, first of all, you're handling such a big role in a very big company. So all the best to you, and we are very proud of you. आप जहाँ पर पहुँची हैं, और आपने जो कहा ना, train and hire, do not lower the bar, ये बहुत important है. ये नहीं कि आपने just because
मे बी आपके डिसेबिलिटी सो कॉल्ड डिसेबिलिटी है इसलिए बार लो किया जाए, नहीं, हम उसको कैसे ट्रेन और उसको आगे बढ़ा सकें। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सार्थक ने एक सिस्टम डेवलप कराया है ज्ञान सारथी करके। उसमें हम लोगों ने जो एक सिस्टम पहले बना हुआ था स्टार्ट बीन्स का, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं ऋषभ श्रीवास्तव, ये स्टार्ट बीन्स हैं जिनको आप इनके बारे में इनके सिस्टम के बारे में पता करना चाहें तो उससे ज़रूर पता करें। लेकिन हमारा मकसद सार्थक का यही था कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो कभी पहले बना ही नहीं हो, और ना ही वो केवल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हो, बट पीपल विदाउट ऑल्सो, एवरीबडी शुड गेट द सेम सिस्टम, और वो सिस्टम इस तरह से बना है। तो मैं वो चाहूँगा मधु जी आप भी एक बार कभी इसका देखें, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करें एंड देखिए कि आपके यहाँ वो सिस्टम चलता है नहीं चलता है क्या है, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं सार्थक में कि वी डोंट वांट टू लोअर द बार, वी वांट द पीपल जो सार्थक से ट्रेनीज आएँ वो ऐसे हों कि वो किसी भी संस्था में काम कर सकें, और हम उस तरह का ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हम अपने यहाँ भी वो फॉलो करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल कम टू यू विद मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस Sangeeta Robinson ji from PVR Cinema. Sangeeta Robinson is the Chief Sustainability Officer of PVR Inox Limited and leading the ESG initiatives right now across each aspect in the life cycle of a cinema operations, with the aim of leveraging power of cinema to encourage cinegoers to make sustainable life choices. Sangeeta has created the blueprint for inclusive entertainment in the country with specific focus on PWDs. ये बहुत important है और मेरा प्रश्न भी इसी पे होगा. She is also actively involved in influencing policy in favor of creating accessible content for Indian cinema and pushing for digital content accessibility as per WCAG 2.1 guidelines. So Sangeeta ji, the moment one mentions about PVR, तो एक तरह की different energy, different ऊर्जा आ जाती है कि सिनेमा की बात हो रही है, और उस समय हम ये चाहते हैं कि इसके बारे में how has PVR managed their physical halls या जो content है कैसे उसको आप you can reach out to people with disability, and क्या मैं as if I am a divyang, can I reach my seat that I want to watch a movie on, या मैं hearing impaired हूँ या मैं visually impaired हूँ, तो मेनली क्या क्या व्यवस्था की गई है, तो इसके बारे में आप बताइए. Thank you so much. First of all, big congratulations to Sarthak for the new center that's getting inaugurated. It's one of a kind, and we really look forward to seeing the outputs of the center. Thanks, Madhu. I think first of all, the terminology and the way we talk about people with disabilities has to change. The othering has to stop. If only we can start. In fact, I've decided I'm going to do that. Insist that we say those of us with disabilities. I think if we can start talking like that, it'll naturally kind of encompass that anyone can have a disability. That doesn't make that person different. Nevertheless, in PVR Inox, incidentally, for those who don't know, PVR and Inox recently merged. So we are PVR Inox Limited. We started the journey on making cinemas accessible for people with disabilities in 2018. We had no one to follow. Yes, we looked at the West, but then a lot of things are different here. Plus, with the Rights of People with Disability Act having been notified in 2016, there was a little bit of understanding and, that certain changes had to be made, but frankly, we had no roadmap to follow anybody with. So we learned as we went along. The first thing that was very obvious was that while the cinema access is in our hands, the access for people with hearing and visual disabilities is not, because that is content dependent.
So the existing cinemas at that stage, yes, we needed to ramp them up by either providing with ramps. We had no option of breaking steps and being able to redo that, because if we have to do that, we have to go back to the planning department and get all the layouts approved again. So the only option for us was to retrofit. We did a lot of research and came upon the Power Track Climber, which there are 54 of them in the PVR system, and we continue to buy more of those. These are, this is equipment that is not stuck to one auditorium per se. It can be used in any part of the cinema, and it lifts the wheelchair along with the person in it and takes it with a track mechanism to the desired row. Simultaneously, the new cinemas have been right from, in fact, we again had to reinvent as we went along. Initially, I started working with the our design team, but then we realized that that was too late in the life cycle because I had to start working at the builder stage, because there are certain structures that are already made and nothing can be done about them. So anyways, it's been a gradual journey, and we are coming closer to the harmonized guidelines. However, we ensure that there is access at least either in the front or in at the back, because by virtue of the theater, like you can see in this case, since it has to be at different levels for better visibility, it's not always possible to make more than too many rows accessible, because it is a format that is in different levels. So having said that, yes, we have come across a lot of issues. In fact, right now also I was answering messages for subtitles. As you know, all films don't come with subtitles. Captions are out of the question. They only come for Netflix and Hotstar. So the tussle is to be able to satisfy all kinds of customers. So for movies that have subtitles, we make them accessible on the platforms, on the booking platforms, indicating that this show is for subtitles. We cannot make all shows with subtitles because there are we get a lot of pushback from other customers saying that the subtitles disturb them. And that's why we have limited shows, but we ensure that they're discoverable for the hearing impaired. As far as visually impaired are concerned, sorry about that, Madhu, but there are very few movies that are audio described. Initially, in 2019-20, Saksham did a few. So frankly, there are about 7 or 8 films that are audio described. None of them at release are ever audio described. We, along with a lot of civil society and a lot of other individuals, have been pushing for this change. We've approached the government multiple times. The government, in turn, has also written to the Producers Association. However, I think that's a change that we are looking forward to. And when we do have it, let me put on record that PVR Inox has the facility to be able to stream audio description through your mobile phones. So it'll need no extra device, nothing. You walk into the cinema with your mobile phone. You just have to download an app, and you will be able to stream enjoy the films with audio description. Thank you. Thank you very much, Sangeeta ji. आप लोगों ने सुना, ये बहुत अच्छी बातें आ गई हैं यहाँ पर. मूवीज़ की बात हो रही है, और मूवीज़ का मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी और खूब मस्ती. तो इन्होंने जैसे बताया कि भाई एक ऐप से आप अपनी मोबाइल पे स्ट्रीम कर सकते हैं वीडियो, और जो मूवी का वीडियो है, दैट इज ऑडियो डिस्क्रिप्शन. ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैन बी डन ऑन द मोबाइल इटसेल्फ. तो ये कौन से हॉल में हो गया, जस्ट टू टेल, यहीं से जा सकते हैं शायद. So, like I said, this is still, I mean, movie has to be made in that format. Only if the movie has audio description, cinema will not matter, because then it's the app that does the job.
तो ये तो और दूसरा ये ट्रैक मैकेनिज्म जो आपने बोला कि यू कैन गो टू योर डिजायर्ड रो, उसको क्या कहते हैं, मतलब जस्ट टू इफ दे वांट टू आस्क पीपल. It's called a power track climber. We use Sanoptr, which is a European, made in Austria device. But if they were to ask the movie hall person, Yeah, power track climber. power track, Power track climber, yeah. power track climber, इससे आपको सुविधा होगी अपने डिजायर्ड सीट तक जो ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो जिनको. Okay, next I come to, because movies की बात हो रही है, तो let me bring in Vijay Jodha ji. He's on the, he's joining us through digital means. Hi, Vijay, can you hear us? Vijay, can you hear us? Vijay, can you hear us? Yeah, Vijay, can you hear us? No, you've taken off the mute from here. Hi, can you hear us? Maybe you can work on it in the background, and I'll go to the next speaker. Major Dinesh Sharma. Major Dinesh started his career with Army in 1997. Prior to this, he finished his schooling in college from Delhi NCR and appeared for the CDS exam. A first-generation officer joining Army was his dream. He was commissioned into the 6th Battalion, the Rajputana Rifles, and Infantry Regiment par excellence. After completing his initial 5 years commission, he decided to explore the civilian world. In 2004, he started his corporate journey with CSC, Cargo Service Center, an affiliate of KLM Airlines, where he spent about a year in operations. Then he moved to Wipro Technologies in 2005, stayed there with them for 6 years, largely in Hyderabad and now in Delhi. Major, how are your Divyangjan students working in the culinary school that you have worked in and currently in Wipro? So, what is your, let's say, experience by employing such people and by being able to train them to be able to make careers within the organization? Thank you, sir. So when in last 15 minutes, whatever I've heard, I suddenly feel myself so low in the ladder. My exposure with person with disabilities started when I was in the army, and I saw a fellow soldier becoming disabled in front of me. But I was too young probably to understand what does that mean. It's call of duty, letting our life go, letting our limbs go is part of life. We joined these services for that. In 2010, I was working with Wipro, and I got to know some visually impaired people have joined in the team. I was very curious. I was wanting to find out how can somebody be visually impaired and do a job. And I was told they're doing a job as good as, like how, you said we. I went there, and I was pleasantly surprised. They were as good. I was so curious. I kept asking those questions, and how, can you do this? Can you do that? And they were able to do everything that we were able to do. Probably the incident of the army, and I'm giving one example, but there were many. More than that, this was the incident in Wipro that made me a little more aware about the person with disabilities. And that's how when I got to know those people were employed through Sarthak, and that's how I got to know Dr. Aggarwal. His number was saved in my phone book, and his number probably in his. In 2023,
we got an email that somebody wanted to conduct a competition in the academy, and it was Dr. Aggarwal's team, and I was like, wow, after 13 years, how this worlds meet. So even now, after I run a chain of culinary schools, that we are into skill development, but then it's for those with are fully able. It never crossed our mind how do we really take this skill development to the people who probably cannot be as effective in handling those machines, tools, the equipment, the processes. Last year, Ranveer Brar, the celebrity chef, he approached us saying he knows somebody who wants to do a course, and he got her to the academy. She was mentally challenged. I'm sorry if I don't use the right word, which is acceptable in this side. And we tried with her, and she completed the 9 months course like anybody else, like all the other students who could do it. And since then, we have had almost like 15 students who have done the course with us. So that was an eye-opener, and we are trying hard. And when I got to know about this incident, I thought I'll probably, more than I can contribute, I will learn and take something back as to how I can make this more inclusive. My education institutions I can make them more inclusive, and bring in this training for people who can, probably get a different look at their professional life as a baker or a culinary chef. Thank you. Thank you. Thank you, Major. Just to give you another statistic, which is very important the way when we deal with, let's say, the Divyangjan population, so-called. I don't want to term it that way, but yeah. For 75% of the people, they are from rural areas. In rural areas, you won't find too many industries, too much of corporate kind of reach. Culinary is एक ऐसा profession है कि वो लोग घर बैठ के खाना बना सकते हैं या कोई cloud kitchen की बात हो सकती है. So can you just elaborate on cloud kitchen and what scope does it have in the rural side, and how maybe your schools can help in propagate that in the rural areas? Just as when you mentioned about your culinary school, I just thought this is very important for people listening here and through digital means also. So we all have seen, and especially since pandemic, how cloud kitchens have proliferated the entire, not only India, across the globe. Some of my students who have passed out, they're doing amazingly well, and they're not from the tier 1, tier 2 cities. I know they are from the towns that we not even heard about them. Now, if somebody who gets trained can open a cloud kitchen and be effective in selling in wherever they are. Now, somebody who gets trained, irrespective whether they are, whatever, if they are Divyangjan, it is equally applicable to them. And I think this is a good source of how we're talking about the financial independence. This especially because they don't have to go out to the client, they don't have to go to they don't have to work on heavy machines, they don't have to work. It's just that whatever, depending on their restriction, they can get into something which suits them and can really make a good living. I'm sorry, I don't have an example of this, but now after this, I'd probably go back and do a little more research and see if we have some student who have doing something on these lines. Thank you. Thank you. That's very nice for that. Now, when we are talking of a large, let's say, opportunities kahan hai, or especially in rural areas, या tier 2, 3, 4 towns में, तो एक नाम ज़रूर याद आता है, which is Reliance Retail. My next speaker is going to be Bani Khurana ji. She's the corporate AVP in Reliance Retail. She's a postgraduate in HR and master's in psychological counseling with more than 2 decades of experience in human resource management in IT, telecom, retail, and real estate sectors. She has passionately
driven D&I activities, diversity and inclusion, that is, at Reliance Retail from conceptualization to successful implementation through a large employee base. Baniji, with such a large base of employees and outlets, how do you manage the rollout of D&I activities? And it's not recruitment alone, but propagating a culture which requires involvement of one and all. To tell us more about it, please. So, hi everyone. I think after Madhu being the first speaker, all of us have got a little apprehensive about what terminologies to use. Okay, so a disclaimer. I would say what we've lived by in Reliance Retail is, in fact, and that holds true for all the pillars of DEI under retail, is that we solely believe that the only disability is a bad attitude. You know, and we believe in hiring people for their skills, and it ends there, and that's what we are trying to imbibe. So that's why I always say in any conference, in any discussion, that excellence actually is a journey we are trying to embark on. We've made a kickstart. And I don't know where the destination is, but we continuously try to raise the bar. I mean, there are a lot of people who tell us that we've done enough. We've got 1,600 people, I think, as we talk today. The count keeps going up, but every time we keep getting this feedback that we are not seen evidently on many platforms, we don't want to compete. That's because we want to really do something meaningful, much higher than just hiring people and getting them on board. So there are a couple of milestones to answer your question, to take care of the scale, the reach, people from rural backgrounds. First, of course, is to get started right, because as an organization we are very big. Of course, the DNA of Reliance is the same, but then there are cultures and subcultures running within the organization. Every business is different, every nuance is different. So how we got it right is, to get started right, we started with a very, very small pilot with our grocery stores, because we had the top management on board. And trust you me, it's needed, the support of top management, because that support and seriousness comes with it. So we started with our Reliance Fresh stores, we moved to our Reliance Smart, and today as we talk, we've got about 1,000 plus people in the grocery stores who set up residence for all our verticals, that, this is the employee group which brings maximum value addition to the table. I'll tell you how that happened. Indicative trends obviously spoke about sincerity, loyalty, a very high tenure, but we had very good customer feedback, we had very good customer footfalls, and that's where this whole piece became a big business case for all the other formats to follow. What followed was then trends, fashion and lifestyle. And today as we talk, we are planning to even hire people and expand the canvas beyond hearing, speech and impaired, and the ortho, which is normally, these are the two disabilities which organizations look at usually. But now we want to expand the canvas to more organizations, more disabilities, and what we can make the most of. And of course what works is a whole lot of consistency and standardization, I would say. It's very, very important to put in consistent efforts to, have, it's a mindset change actually. So yeah, one has to get started right from dealing with unconscious biases to having a top-down approach, as I again say. Have your N-1s, N-2s on board, that is, have a top-down approach. Have all the people who are working with these, this particular employee group on board, give them buddies, give them the right conducive environment so that they can thrive. And now it's time for us to go a step further to, have some curated training programs so that we can, upskill them and make the most out of them. And again, after the virtual, there's a very interesting thing, which is more of a personal experience I would like to share, that after, I think we had one session with Atulji virtually, if I'm not wrong, just one. I don't know if a second one ever happened, I don't remember. In that session, when Madhu spoke, that, don't treat us differently, and that's where she started right now. Honestly, all my videos, because this is a very, very special month, because it's the International Day of People with Disabilities, which just went across on 3rd of December. None of the videos, any of my leaders, I allowed them to use the word disability or limitations or challenges. Everywhere we just said colleagues, and
we felt so good about it, you know. I mean, it was just like a small change, and right from the CEO to the CHRO to everybody agreed, yeah, you're right. I mean, why are we giving it a label? So let's do things differently. So I'm thankful to you for that, Madhu. It's a small thing. And yeah, things like inclusive vocabularies, having an LMS and certain mandates and a certain structure to it where, you know, you have, from a scalability perspective, a module which people can access, no matter which part of nook and corner they are. And you have to have some kind of localized targets because that's what works for you basis customer preferences. So it becomes a business case from that perspective also. So you have to have a very balanced hiring calendar and you have to have a proper governance mechanism. We of course have employee resource groups as well from all across pan-India. 50% of these groups are from the employee group itself, you know. So they are the ones who tell us that this is the problem we are facing. So for the hearing and speech impaired, we started with giving them badges. We started with giving them T-shirts which just said the fact that, look, I am so and so, or I am, you know, we made a label, we made a mark at the back, because we didn't want them to have a bad customer experience and then come back to us for creating a conducive environment. So that was the starting point, and I would say that this is just the beginning, and we have a lot to achieve. Yeah, any questions, more than happy. Thank you, Bani. Just a thought came to my mind just now. Look, Reliance is one of the most diversified and big group and expanding as we speak. And again, I am looking for opportunities which can be extended in tier 2, tier 3 and rural areas, let's say. And that's where a lot of your distributor network and your vendors and your suppliers are in that network. Can they be persuaded to look at diversity and inclusion the way you are doing it in your own company? Because you are the one who kind of been negotiating deals on how to get goods from them or how to get goods across to them. So can they have in their distributorships or warehouses or what have you? There's so many other ways where. So can this particular DNI chapter extend beyond just Reliance Retail to its associate members? Your views? When you say associate members, you're talking about people we partner with? Yeah. I mean, distributors, they have warehouses in various places. Of course, of course. Who are your let's say, either owned or maybe associated with you in some shape or form. So good that you brought that up. So the 1600 number which I gave and I said still counting, this includes our third-party payroll people as well. So there's already a head start there, and I am proud to say that with the help of Sarthak, earlier we had introduced, I think, about 23 unique roles where we could have hired such people. Right now that count has gone to 80 plus. You know, so that's the starting point again for us. And we have identified about, I think, 48 to 49 corporate roles as well. You know, so that's where we intend to hire them, whether in finance, whether in HR as a starting point. And of course, straight away at the forefront, as and when we can do that. But definitely the distributors, the suppliers are very much a part of the journey. We just need to see where we can leverage on and make the best of it. Because since you said the scale, the reach, pan-India, that's where the major challenge is. And that's where the strength of an external partner comes in to join hands with us and, you know, give us that extra edge. So, yeah. Yeah, I mean, taking that thought forward, I mean, I'm very happy to hear there's some 80 plus roles, which is news to me. या आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि 80 से ज़्यादा जॉब रोल्स इन लोगों ने डिफाइन किए हैं और उस पर आप लोगों को नौकरी या कुछ तरह का पेशा मिल सकता है और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए as far as the LMS is concerned, I mean you can look at the one that Sarthak is using because that's already attuned to that set of people and of course ऋषभ से आप बात कर सकते हैं इस मामले में बाद में. Sure, we'll do that. Next, I want to come to, I think Vijay is back online. I don't want to keep him. Vijay, can you hear us? Vijay, we can't hear you. I think we've got some time to get this sorted out.
Okay, next I come to, I mean, you have talked people on the ground right now. Let's talk to somebody who's in the air, and that's somebody from Indigo. So now this is Rakesh. He's the AVP of Human Resources and D&I lead for Indigo. Rakesh is actively working towards making workplaces accessible and inclusive for people with disabilities and other disadvantaged groups. He has constantly been vocal about creating a conducive environment for persons with disabilities and how to promote their skills. Rakesh, every time I walk up and down the catwalk leading to a plane, I bless Indigo. I think many other airlines don't have that facility. And what else is Indigo doing to make travel easier and more comfortable for a Divyang? Thank you. And of course, congratulations for Sarthak's new project that is going to be inaugurated in the future. So, Indigo has, from its very inception, been very friendly to or to understand the needs of persons with disability. And one of the things that we brought in is the ramp, because I remember working with another airline before Indigo, and where people who were on wheelchairs, it was quite a task for them to, you know, the people who would assist them to take them up the staircase and, you know, make them seated inside the aircraft. So that's where was the first step where Indigo thought of, and we brought in this Can you hear ramp. me? Okay. So we brought in this ramp, and that became very, very easily accessible. Couple of other things that internally, which is happening not just in the customer space, but also within the employees. For the customers, obviously, when somebody walks in, if you look at the entire journey of a customer in the airport, their accessibility from the infrastructural standpoint, which is more lying with the airport authorities and the government. And those have been right now being built to the extent that some of the airports are completely accessible, including your tactiles and you know, other aids being provided to the persons with disability. In terms of support system, couple of things that we realized when we onboarded this journey of DEI is the fact that जब तक employees उस छोटे-छोटे चीज़ों से sensitize नहीं होते, जैसे अभी हमने काफ़ी सारे बातें बोली, एक शब्द जो हमने सुना दिव्यांगजन, और कुछ शब्द जो हम सुनते हैं जो बड़ी ही conducive शब्द है for in the space of persons with disability, वो सारे sensitization, अगर वो sensitize, because not just infrastructural चीज़ें, बट एक कस्टमर जब फ्लाई करता है तो बहुत सारे चीज़ें उनके साथ चलती हैं, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनका फिजिकलिटी. तो जो कनेक्ट विद कस्टमर्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ. और वो कनेक्ट अच्छा होने के लिए हम लोग ने सेंसिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया. So there was a lot of focus that was put on sensitization, right from creating systems internally where there will be refreshers every year through the LMS, so that people get refreshed and understand what are some of the important elements when you're dealing with a person with disability. This is one. The second part is that for the first time, because there was sensitization and because there was acceptance, because there was adaptability, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों ने चेक इन किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि चेक इन काउंटर ऐसा होता है जहाँ पे हर कस्टमर एकदम इमीडिएटली जाना चाहता है, क्योंकि लोग खड़े रहते हैं बहुत लंबे लाइन पे, और एक टर्न अराउंड टाइम है. उनका टर्न अराउंड टाइम वाज एज गुड एज एवरीवन एल्स. तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. तो अब उसमें हम एक नेक्स्ट स्टेप हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ आजकल स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शंस है, जहाँ पे इस तरह के गॉगल्स हैं जिसमें ये प्रोविज़न है. तो वो इज़ द नेक्स्ट दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, बिकॉज तब वो और इफ़ेक्टिव हो जाएगा वो बंदे के लिए जो वहाँ चेक इन काउंटर में बैठा है, उनके लिए ईज़ ऑफ एक्सेस एंड कस्टमर्स के लिए भी ईज़ ऑफ एक्सेस. एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मधु जी ने बोला, और वो ये कि इनको डिफरेंटली ट्रीट ना करे और सबके समान इनको भी ट्रीट करे.
एज इन द पर्सन टू डिसेबिलिटी एवरीबडी एल्स। तो हमारा जो पॉलिसी है शुरू से ही रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में हम भी वही स्टैंड लेके चलते हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड क्रिएशन नहीं होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी स्टैंड पॉइंट से ऑब्वियसली हमें देना पड़ेगा, जिसको हम टूल्स बोलते हैं, जिसको इक्विटी बोलते हैं, वो तो हमें भी कभी ना कभी चाहिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टूल्स हमारे जॉब हमारे रोल्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बट उसके अलावा ट्रीटमेंट एक ही समानता होगी, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे स्किलिंग की बात हुई कि स्किलिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर मैं आता हूँ। बट समानता की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उनको सेम लेंस से इवैल्यूएट किया जाता है कि उनका स्किल क्या है, ना कि कोई अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो तो उनको एक स्किल एक लेवल नीचे में जाके हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते, तो वो आई थिंक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी वो अच्छा नहीं लगता है। और हमने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, उन्होंने बोला हमको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, हमको कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो वो बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए भी लर्निंग था, और ये लर्निंग को हमने स्प्रेड किया। तो जो जो चीज़ें हम उनसे सीखते हैं दिव्यांगजन से, वो हम हमारे सारे लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें। अच्छा, और एक चीज़ जो हमने हमेशा बोला कि आपसे अभी जैसे बहुत सारे शब्द हैं, अब सबको तो सब शब्द पता नहीं है, कोई शब्द को किसी तरीके से बोल दे, दिव्यांगजन को शायद खराब लगे, तो लोग बोलने से ना डरें कि बिकॉज खराब लगेगा मैं बात ही ना करूं। वो बैरियर को भी हमने हटाया। हमने बोला इट्स ओके टू डू अ मिस्टेक, आप जाके बोल सकते हैं कि मैंने ये बोला, क्या आपको खराब लगा? अगर खराब लगा तो आई एम सॉरी। ह्यूमिलिटी विद प्राइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्टैंड पॉइंट से, तो जिससे एक अच्छा कमराडरी बिल्ड होता है विद इन दी कॉलीग्स। क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ है, डेटा है जो बताते हैं कि जब तक आपके एम्प्लॉयज़ एंगेज नहीं है, खुश नहीं है, तब तक वो आपके कस्टमर्स को खुश नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टडी है जो मैंने किया था, जिसमें एक ENPS स्कोर होता है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय NPS स्कोर और कस्टमर NPS स्कोर। जहाँ जहाँ कस्टमर NPS स्कोर बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ हम देख रहे हैं एम्प्लॉय NPS स्कोर बढ़ रहा है। एम्प्लॉय NPS स्कोर बढ़ रहा है, कस्टमर NPS स्कोर बढ़ रहा है, तो बड़ा ही क्लियर रेलेवेंस हो जाता है। तो उसलिए हमने कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब रही बात जो स्किलिंग की, जो मैं बोला मैं बाद में बताऊंगा, उसमें हमने एक जगह पे एक्सपेरिमेंट किया था बैंगलोर पे, और उस पे बहुत बड़ा डिफरेंस हमने देखा। अब बैंगलोर में आप ही के सार्थक के थ्रू से ही हमने कुछ दिव्यांगजन को एयरपोर्ट में सेंसिटाइजेशन सेशंस करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ दिव्यांगजन जो हायरिंग से पहले, उनको हमने एयरपोर्ट दिखाई, रोल्स दिखाई जहाँ पे वो काम करेंगे, या उनको नौकरी मिली तो यहाँ इस रोल्स पे वो काम कर पाएंगे। वो बैच में से सबसे ज़्यादा लोग का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि एक और चीज़ जो हमेशा निकल कर आता है कि बिकॉज बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में, सिस्टम तो मैं नहीं बोलूँगा, अभी तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो अभी 2015 में जो 2020 में जो आया था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पर मैं बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस। जैसे हमने कुछ लोगों से बात किया, वो बोले हम तो 5th के बाद पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि 6th स्टैंडर्ड था 2nd फ्लोर पे, और हमारे पास लिफ्ट ही नहीं था, तो हम चढ़ते कैसे? तो उसके वजह से हम उसके आगे पढ़ ही नहीं पाए। उसके वजह से उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कमते जाता है। तो कॉन्फिडेंस कमने के लिए ऐसा तो कोई स्किलिंग नहीं है कि आपने बोला ये दवाई खा लो या ये पढ़ाई कर लो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको इन पर्सन आना पड़ेगा, आगे चल के अपनाना पड़ेगा। तो वो जो लोग आए, उनको जब हमने दिखाया, उन्होंने उस रोल्स पे जाके खड़े हुए, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन किए, तो हमने देखा उनका कॉन्फिडेंस 4 गुना ज़्यादा बेटर हो गया और उनका सिलेक्शन। तो स्किलिंग के साथ मुझे लगता है कि इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, इस तरह से इंडस्ट्रियल विजिट्स, इस तरह से इन्वॉल्वमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बेहतरीन तरीके से उनको सहायता देगा। अब रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारा जो प्रेजेंस है इंडिगो का, तो पैन इंडिया है, जम्मू से इधर पौंडीचेरी और पूरा ईस्ट एंड वेस्ट में। तो जितने स्टेशन से हमारे, हमने एक उसमें एक मैंडेट रखा है कि हमारे हर स्टेशन पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, LGBT का होना चाहिए, और सबका होना चाहिए, महिलाओं का और पुरुषों का। और वो स्प्रेड का हम बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस करते हैं। और हमारा पिछले 1 साल में जुलाई
2 से अगस्त 23 के अंदर हमने ऑलमोस्ट 156 दिव्यांग जन को हायर किया और जिसके लिए हमें एक अवार्ड भी मिला एज अ फास्टेस्ट रनर अवार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हमने धीरे धीरे की है, पर जो बहुत अहम चीज़ जिससे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ मेरा स्टेटमेंट, कि दिव्यांगजन के साथ काम करना बहुत आसान है। जो लोग सोचते हैं कि मुश्किल है वो एक माइंडसेट है। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। हम सब इंसान हैं और हम क्या हमारी एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, वो सब बाद में आती है, जैसे मधु ने बोला कि इक्वालिटी की बात है। और दूसरा चीज़ ये कि किसी को भी आप स्पेशलाइज्ड अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको स्पेशलाइज्ड इक्विटी प्रोवाइड करिए, उनको टूल्स प्रोवाइड कीजिए जिससे वो परफॉर्म कर सके। और तीसरा ये है कि जब वो किसी भी संस्था में नौकरी कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ देम हमने देखा है कि वो एंट्री लेवल पे ज्वाइन करते हैं। उनका लाइफ साइकिल में उनके लिए करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी मिलने के बाद फिर आगे कैसे बढ़ेंगे वो चीज़ में भी फोकस देने से फिर वो लोगों में वो प्रोत्साहन मिलेगा और उनको देखा देखी बाकी लोग भी अपनी ग्रोथ के लिए ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंसी नहीं आ जाना चाहिए उनके करियर में। थैंक यू, दैट इज़ वेरी एनलाइटनिंग टू नो कि आपने यू आर लिसनिंग टू द कस्टमर। अगर कोई में एंड यू आर रेडी टू से सॉरी विद ह्यूमिलिटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्लेंट्स से ही कस्टमर का रियल मुद्दा मालूम पड़ता है। नहीं तो ये सर्वे जो होते हैं या टिक इन द बॉक्स करके आप हैप्पी सैड क्या है वो सब तो दूसरी बात है, लेकिन जो कस्टमर बोलता है, और ये चीज़ मैंने अपने बैंकिंग करियर से सीखी। मैं जिस डेजिग्नेशन पे था उसमें हम मेरा एक जो जैसे कहते हैं जिस पे अप्रेजल होता है वो ये था कि भाई आपके यहाँ कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी आई और अगर कम आई तो क्यों आई और ज़्यादा हुई तो भी क्यों आई। तो दोनों तरह से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कंप्लेंट दबाई जा रही हैं और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही ऐसे फैल गए कि कस्टमर्स को उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज बनते थे वो केवल इसलिए बनते थे बिकॉज कोई किसी कस्टमर ने कहा कि देखिए हमको इस चीज़ से तकलीफ़ हुई, इसका कुछ कर सकते हैं क्या आप, और उसका क्या कर सकते हैं, उससे ही आइडिया आता है कि अच्छा हाँ ये चेंज कर दें तो कुछ नया बन जाए। अब जैसे इंडिगो आया, इन्होंने अपना वो एक रैम्प वॉक बना के कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। उससे पहले आज तक भी लोग वो स्टेप्स लगा के ऊपर जाते हैं, और चाहे इवन मेरे लिए भी बड़ा अच्छा लगता है जब वो रैम्प वॉक होती है, अपना स्ट्रोली लेके ऊपर चढ़ गए और उससे उतर गए। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उससे एक्विटी, जिन्होंने कहा एक्विटी आ गई, उसमें ये कोई बात नहीं कि दिव्यांगजन के लिए मैं या किसी और के लिए, मुझे भी उतनी खुशी होती है जितना दिव्यांगजन के लिए होती है, एक्विटी कहलाती है वो चीज़। तो थैंक यू वेरी मच एंड वील कम बैक टू यू विद सम मोर क्वेश्चंस। नाउ लेट मी गेट ऑन टू विजय जोधा जी। Vijay, can you hear us? Very well. Sir, can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Oh, wonderful. Thank you. Such a lovely occasion and a real honor to be with such distinguished panelists. Thank you so much, sir. Yeah. Let me just introduce Vijay. Vijay is a writer, photographer, filmmaker and also an author. And he's based in Gurugram. इन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं और इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे वेरियस गैलरीज, म्यूजियम्स, आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल्स वर्ल्ड वाइड ये इनका काम देखा गया है और सराहा गया है। He is an MA in film production and media studies from New York University and has worked with directors like Ang Lee and Meera Nair. His films have been broadcast on 75 channels in 195 countries on BBC, CNN and Discovery. 2 of Vijay's books and 4 of his films are in the US Library of Congress, while one of his projects is archived at OSA Budapest, the premier repository of materials dealing with human rights. बहुत ही acclaimed filmmaker हैं और ये सार्थक के साथ समझ लीजिए कि जब से सार्थक का शुरुआत हुई है उसी समय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पहली सार्थक के ऊपर फिल्म भी बनाई और उसके बाद हमारे साथ हर रास्ते पे साथ चलते हैं। और विजय, you are an acclaimed filmmaker.
You're the first one to make a film on Sarthak. In what way can media facilitate the awareness of the topic of this discussion, financial empowerment, skill development, and excellence? So over to you. Thank you, sir. There are a lot of ways one can think of. Number one, obviously, is as we have had these very distinguished panelists pointing out wonderful best practices, which I think need to be highlighted, which in the other industries, other verticals, other even I would say not just industries, but across the board, all kinds of sectors, different stakeholders in society, they need to look at it and learn from that. Even in the educational sphere, they can see that these opportunities are there. The first part is that more media materials, be it short videos, viral videos, films, books, photo exhibitions, whatever it may be, to highlight all these best practices. So that is the first thing that media point of view, I think that can be done. Number one. Number two, I think we also need to, like when we had the earlier discussion, if you recall, sir, we had this panelist from PVR, for example, and things like that, which is that the so-called differently abled or Divyang community, it's not just finding gainful employment or training, they are also representing a very, very substantial sector or a section of our consumers. They represent a lot of money and profitability for the different organizations. So if they become a little bit more friendly, a bit more inclusive, it is going to add to their bottom line. So that is the second part. So again, the ones who are doing PVR, which is doing that, that needs to be highlighted, that needs to be shared. Others can do it too. It's no rocket science there. So that is the second part as far as media bit goes. Number three, I also would like to point out that you have a lot of people in India who happen to be differently able. Whether you look at Jitender sir, Dr. Jitender Aggarwal, who started Sarthak from 8 kids, from students from very marginal background to about 60,000 plus we have managed to train over the last 15 years. So stories like that, which are so inspiring, they are inspiring for everybody, not just in one kind of situation, but inspiring all over the world. And you have a lot of people like that who are not at all held back by their limitations. And people like who have got medals at the Commonwealth and international fora, competing with the other people and doing so well. India's greatest artist that we have, one of them, as we all know, late Satish Gujral Saab was hearing impaired. I had worked with him on 2 projects. And he was one of the greatest artists we have produced. He happened to have a disability issue, but it never came in the way. And he was, so those kind of things. You have a lot of people in different spheres who are incredible, and they are doing that. And this part doesn't come anywhere in the picture in their achievement and their desire to succeed and contribute to a larger society. So those kind of heroes again need to be highlighted. Last thing I also want to point out is very quickly is this whole idea of approaching this issue from a very, very, a charity kind of point of view, which is a good way to get started. But I think beyond that, we have to see it as a partnership. All of us, regardless of where we are coming from, all of us are physically and emotionally dependent on other people. From the time our children, from we are minor till the age of 18, you're dependent on other people. Once you cross 60, again, you're dependent on other people. And as you get older, all of us, our physical ability go down. So all of us have that challenge. So let us not say that, okay, there's this group called Divyang community which has challenges, rest of us are very perfect. It is not. So that boundary or that Berlin Wall between these two groups have to be brought down to make the society truly inclusive. So these 4 points is what I would like to contribute as a media professional. Thank you. Thank you, Vijay. It's very important that the role that media plays, it's not about news and all the kind of things that you see, but media, जैसे अभी मुझे ये idea है कि Indigo आपने जो experiment किया था and you made people aware and you found that group got the best, let's say, employment or absorption, maximum absorption happened. तो वही चीज़ को अगर हम किसी वीडियो पे कैप्चर कर लें कि भाई
what is where and how, because airport is a very sensitive place, वहाँ पे सब लोगों को ले जा सकते नहीं है, जो भी है आए, तो at least that and those that is captured in short videos, and maybe that's again played on, जैसे हम सार्थक का एक है ज्ञान सारथी which is the LMS, and there is a कैप सारथी which is a mobile app. आप लोग जो भी दिव्यांगजन यहाँ पर हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोग कैप सारथी पे अपने आप को रजिस्टर किया है या नहीं किया तो ज़रूर करें, यहाँ पे सार्थक वाले लोगों से बात करें. I'll just add. आपने ये बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी स्किलिंग कीजिए. और मीडिया की बात जो हम कर रहे थे ना, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहती हूँ. मीडिया हम आजकल अब मतलब ज़िंदगी भर ऐसे ही होता है, हम जो दिखता है वो बिकता है. तो मीडिया में अगर हम डिसेबिलिटी को मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा गैप ब्रिज करेगा. जैसे कि डिसेबिलिटी के ऊपर मेन स्ट्रीम में मूवीज़ भी होती हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ आती हैं. हमने ब्लैक देखी है और कई मूवीज़ हैं, राइट, करीब 250 मूवीज़ तो होंगी. लेकिन उन मूवीज़ में, मेन स्ट्रीम मूवीज़ में बड़े पर्दे पे वो रोल कौन प्ले करता है? डिसेबल्ड लोग अगर खुद उन मूवीज़ में वो रोल प्ले कर सकें, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा और नीडल को बहुत हद तक मूव करेगा. That's one point that I wanted to add. And जब मूवीज़ आती हैं तो उसमें जिस तरीके से डिसेबिलिटी को दिखाया जाता है, वो प्रोग्रेसिव तरीके से अगर दिखाया जाए, वो भी नीडल को बहुत हद तक मूव करेगा. फॉर एग्जांपल, मूवीज़ में, बहुत सारे मूवीज़ में अभी तक जो ब्लाइंड लोग हैं उनको यूज़ करते दिखाते हैं ब्रेल इज़ ऑसम, वी यूज़ इट. पर हर ब्लाइंड इंसान ब्रेल नहीं यूज़ करता, और भी चीज़ें यूज़ करते हैं. और टेक्नोलॉजी कई हद तक एडवांस हो गई है. मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे करीब 80 to 90% चीज़ें मैं देख सकती हूँ. मतलब बहुत सारे काम मैं कर सकती हूँ. तो उन चीज़ों को भी मूवीज़ में दिखाया जाए तो रूरल एरियाज़ और हर तरफ जागरूकता होगी, और जागरूकता होगी तो लोग घर से बाहर निकलेंगे और बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी, और बहुत हद तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू मधु जी. अभी जो मधुनी ने मीडिया के बारे में बात की और दिव्यांगजन को मूवीज़ में आने की, तो मुझे याद है एक सिनेमा आया था, आई थिंक 2003 का, वो सिनेमा हॉलीवुड का, मर्डर बॉल. और उस सिनेमा में एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया गया है कि उसमें जो व्हीलचेयर वाले वो रग्बी खेल रहे हैं, और जो रग्बी खेल रहे हैं तो उसमें उनके स्किल्स को दिखाया गया है, ना कि उनके व्हीलचेयर को दर्शाया गया इन द सेंस कि उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया, उनके स्किल्स को तवज्जो दिया गया, जैसे कि कोई दूसरा रग्बी प्लेयर जब खेलता है. तो वो मूवी अपने में ही एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के स्टेप्स भी अभी लिए जा रहे हैं, और इसी तरह के स्टेप्स में इक्वालिटी आएगी. थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट तब जहाँ मूवीज़ और वीडियो की बात हो रही है, आई जस्ट टेक अ शॉर्ट, या इज दैट वेरी, तो एक वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. तो जस्ट एंड देन वील टेक अ फ्यू क्वेश्चंस आफ्टर दैट प्लीज. 2008 में जब शुरुआत किया था तो कॉरपोरेट को अवेयरनेस नहीं था, दे वर नॉट अवेयर कैसे हायर करने. बट जब उन्होंने हायरिंग स्टार्ट किया और फिर जब उन्होंने वर्क फोर्स में दिव्यांग लोगों को रखा, तो उनका आउटकम बेटर था नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉइज़ से. सार्थक के थ्रू मुझे जॉब मिली. उसके बाद जो भी पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ, उस पैसे से कुछ अपना मेंटेन करते हैं, कुछ पैसा घर पे भी भेजते हैं, ताकि मेरा मम्मी पापा, मेरा फैमिली है, सारा यूज़ करते हैं, उनको हेल्प मिलता है मेरा पैसा से, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है. जो मुझे लाइफ में सक्सेस मिली है आज, जिसके बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसमें सबसे बड़ा कारण सार्थक है. मैं सार्थक को अहम भूमिका देता हूँ. मुझे ताज में आज काम करते हुए 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, और मैं यहाँ से जो अर्न कर रही हूँ मंथली, उससे मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट मिलता है, और मैं खुद के लिए भी एक अच्छी लाइफ बना पा रही हूँ. मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वो सार्थक की वजह से हूँ. मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और एक सिक्योर जॉब मिल गई है.
I think any any person who comes with special ability comes with a special mind and with a special talent. Anybody who has a talent, irrespective of what the ability or disability they have, they're gonna flourish in the corporate environment and they're gonna earn their livelihood with the respect and the dignity. Today we see that considering we are currently hiring people from the deaf community, and we have seen they are doing exceptionally well. And all the roles that we thought there could be a challenge at their end, I mean, they are performing well. We have given them those tags so that people could understand the challenge that they might face in terms of effective communication. And I think given this whole setup and the conducive environment that we have at this moment, we see that we should increase it by at least 10 to 12 folds. People, we have to train them into a particular skill. So these people, I think, they are very dedicated. They have eagerness to learn the new things, and they are very hardworking. They are good in customer service. Vice versa, the customer also has a little softer corner for them, so which is beneficial for our business also. Thank you. Now questions from the audience. आप लोग में से कोई प्रश्न पूछना चाहे और एक पर्टिकुलर पैनल से पूछना चाहे तो मेंबर से पूछना चाहे तो वो ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हैं any kind of query. हाँ, उधर उनको जरा एक माइक दीजिएगा प्लीज. हेलो हेलो. हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम वंदना कुमारी है. मैं गाजियाबाद सेंटर से आई हूँ. हाँ, मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं बस कुछ कहना चाहती हूँ. जो हमें सार्थक से जो मिलती है, जो हेल्प मिलती है, वो काफ़ी सारे उनको इम्पैक्ट बताते, मतलब हम इन चीज़ों से बहुत एम्बैरेस होते हैं. सॉरी, मुझे इंग्लिश में बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं हिंदी में बोल सकती हूँ. बिल्कुल बोलिए. हमें जो स्टार्टअप से मदद मिलती है वो बहुत ही करती और बहुत ही मिच्योर. हर बच्चा का मिच्योर होता है. हाँ, बहुत ही बैटरी होता है, बट मिच्योर होता है. भगवान ने सबको एक जगह बनाया है. मैं सार्थक में अभी 3 मंथ ही हुए हैं ट्रेनिंग के हुए. मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना जान पाई हूँ, वो इतना जान पाई हूँ कि जो लोग बच्चों को ट्रीट करते हैं एंड बच्चे के लिए बहुत ही सार्थक, और ये सार्थक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही नेक काम कर रहा है. और मैं कहना चाहूँगी कि सार्थक एजुकेशन इज अ जेट. हमारे सार्थक एजुकेशन को कुछ अभी संडे को ये अवार्ड मिला था, बहुत बड़ा अवार्ड से सम्मानित हुए हैं हमारे जितेंद्र अग्रवाल जी. एंड जितेंद्र अग्रवाल जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सार्थक बनाया. थैंक यू ऑल आप लोग को भी कि सार्थक बनाया, और सार्थक से कई सारे बच्चों का जीवन संवर गया है. और बच्चों के साथ काफ़ी पेरेंट्स का भी योगदान है. आई थिंक बच्चे जो हैं ही, लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स बनते हैं ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ है. मतलब उनका खुद का बच्चा एक बेहतर चाइल्ड है, एक बेहतर बच्चा है, तो उन्हें भी हिम्मत देते हैं. मतलब आई थिंक गॉड अबाउट यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जो सार्थक से पाया वो अब आप और दिव्यांगजनों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप भी एक सार्थक का ही एक अटूट हिस्सा हैं. जी, अटूट हिस्सा है. और सार्थक में हर बच्चे को जब गैप होती है
तो मैं हर बच्चों को मैम को भी यही बोलती हूँ कि सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट, सार्थक ने कुछ किया है। हाँ, सार्थक से हमें जो भी सीखने को मिल रहा है और जो भी जानने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, मैं आपको एक महिला की एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। हाँ, महिला का नाम था बंदे, वो व्हील चेयर पे थी। वो जब एक्सीडेंट हुआ था उनका तो वो मैरिड थी। जब एक्सीडेंट हुआ था उनका तो उनका जो पैर होता है वो फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे तो फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, वो जो मेरे सारे सपने थे, सारे ख्वाब थे, सारे टूट चुके हैं। लेकिन उन्हें हिम्मत दिखाई। हमें हर किसी को हिम्मत देनी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। हारने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपना सपना नहीं, हारने का मतलब ये होता है जब हम जिंदगी से कुछ आगे बढ़ते हैं तो हिम्मत करना भी सीखना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे साथ ये एक्सीडेंट हो गया है तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर हमारे सपने वहीं रुक गए, तो हमारी लाइफ जो है वो वहीं पर स्टॉप हो गई। नो, एवरीबॉडी नो, हमारी लाइफ जब तक चलती है जब तक हम जीवित हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you. In fact, I'd ask Tarun, can you get a video clip made for her, and that should be played on Instagram and YouTube. आप जिस तरह से हिम्मत की बात कर रही हैं उससे तो हमारी हिम्मत बढ़ रही है, तो आप ज़रूर उसको आपका ये जो बोलना है उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसको हम और बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। Anybody else, please? आज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं विशेष वाही बात कर रहा हूँ। सर, मैं 30 इयर्स का हो गया हूँ और मेरे को अभी तक जॉब नहीं मिली है। 2017 में मैंने ज्वाइन किया था सार्थक, और अभी तक मैं वेट में हूँ मुझे जॉब मिले, और मैं चाहूँगा मुझे जॉब मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सर। आप पीछे जैसे वो तरुण खड़े हैं, वो देखिए सफ़ेद कोट में पीछे जो है, आप उनसे बात कीजिए और अपना जो भी सीवी है हम ट्राई करेंगे बेस्ट आपको किस तरह से उपयुक्त जॉब मिल सके। एनीबडी एल्स प्लीज? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं लोनी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सलमान है और 2017 में मैंने 12th पास करी है और जी सार्थक एजुकेशन से मैंने कुछ नॉलेज भी ली है और मुझे अभी जॉब की तैयारी कर रही है। और ना मैं टोटल पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ और मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, ना ही मुझे जॉब मिली है। अभी मैं जॉब की तलाश में फिर रहा हूँ। थैंक यू। आपको जॉब मिली है या? नहीं, जॉब नहीं मिली, अभी मैं जॉब की तलाश में फिर रहा हूँ। अच्छा, तो आगे तरुण से बात कीजिएगा तो फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। या अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं एक क्लोजिंग कमेंट सब पैनलिस्ट से पूछूंगा। तो चलिए आप शुरू कीजिए, we'll take the questions. मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए जिनको कोई ना कोई छोटी या बड़ी डिसेबिलिटी है, और ये एक एक्चुअल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है कि जब आपको जॉब की बात हो रही थी कि इंटरव्यूज़ की जॉब नहीं मिली है, लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं और ये एक्चुअली एक कैंडिडेट के साथ हो चुका है। मेरे पास एक लड़का आया था जिसका सीवी देख के मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया था कि 12th पास से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सिनेमा में हम 12th पास एम्प्लॉय करते हैं। वो लड़का
मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसकी डिसेबिलिटी क्या थी, उसके एक पैर 2 इंच छोटा था दूसरे पैर से। उतना तो एक एक्सीडेंट हो जाए और मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए उससे भी हो जाता है, लेकिन पॉइंट इज़ कि उसकी डिसेबिलिटी यहाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो डिसेबिलिटी के आगे सोच ही नहीं सकता था। जिनको नहीं पता है, मेरा एक पैर 17 इंच शॉर्ट है दूसरे से, लेकिन पॉइंट ये है कि, और मुझे वो बताना पड़ा उसको, क्योंकि हर बारी जब मैंने उसको बोला मुझे अपने काम और एजुकेशन के बारे में बताइए, वो घूम फिर के अपनी डिसेबिलिटी पे आ रहा था। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्लीज़ अपने स्किल, अपना जो आप कर सकते हैं, जो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दे सकते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि डिसेबिलिटी को वो करने के लिए हम सब बैठे हैं वहाँ पर। अगर आपको जॉज सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन या आपको रैंप चाहिए, या आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, वो सब देखने के लिए कंपनी बैठी है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी को सामने लेके जाएंगे तो जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल है। मेरी बात आपको शायद थोड़ी सी हार्श लगे, लेकिन मैं खुद मुझे डिसेबिलिटी है, लेकिन मैंने डिसेबिलिटी को कभी अपने ढाल नहीं बनाया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बनाते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप कंपनी जैसे बाकी कैंडिडेट करते हैं, और मधु मैम ने भी वही एम्फसाइज किया कि आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो ये रिहर्सल मत कीजिए कि मैं अपनी डिसेबिलिटी के बलबूते पे जॉब लूँगा। आप लेंगे अपनी जॉब अपनी काबिलियत की वजह से, आप अपने क्वालिफिकेशंस की वजह से, और जो आप वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, नहीं तो वो कंपनी आपको जॉब क्यों देगी, बताइए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू संगीता, दैट वाज वेरी वेल पुट। आई मीन एबिलिटी के ऊपर सबका आपका काम आगे बढ़ेगा। कैन आई आस्क क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन प्लीज? आई थिंक उसी को आगे लेते हुए जो संगीता जी ने कहा कि कॉरपोरेट्स, कंपनी, सरकार, इंस्टीट्यूशन सारे आएंगे अपने अपने एफर्ट्स लेकर, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम, चाहे वो कोई भी हो, आप कितना एफर्ट ले रहे हैं, जॉब जिस स्पेसिफिक जॉब है, उस जॉब में क्या स्किल रिक्वायर्ड है, उस पे अपने आप को स्किल करने के लिए संस्थाएं हैं जैसे सार्थक है, वो आपको सपोर्ट सिस्टम देगी। बट वो एक कहावत है ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गया, तो वही कॉरपोरेट्स तो हाथी निकलवा देंगी, पर वो पूंछ आपको खुद को निकालना पड़ेगा। थैंक यू। It has been quite an humbling experience for me today, learning so much. And since we are in the skill development, मुझे लगता है कि और जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि cloud kitchens and all, this will help while employment, and there are large corporates who can help you to get employment. एक बड़ा important aspect है self employment, and अपना skill कैसे डेवलप करना है, किस डायरेक्शन डेवलप करना है, ये आई थिंक हम सब के ऊपर है। एंड प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस ऑल्सो एज अनदर मेथड, एंड देयर आर ways and means to get yourself self-employed. We'll try to help in whatever way we can and make our education more accessible. Thank you. Thank you. मैं क्लोजिंग थॉट्स में ये कहूँगी कि एक तो जो हम सब नौकरी की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबको चाहिए। एक बार नौकरी मिलती है, काम मिलता है, पैसे जेब में आते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का बढ़ता है। मैं जब बहुत छोटी थी, ब्लाइंड तो मैं सिंस बर्थ हूँ, और लोग सोचते थे कि अच्छा ये कैसे करेगी या वो कैसे करेगी। मैं बचपन से बदमाश बच्चा रही हूँ और कई बार क्लासेस भी बंक किए हैं। मैंने कॉस्मेटिक्स भी बेचे हैं। लोग सोचते थे तुमको दिखता नहीं, तुम लिपस्टिक बिंदी कैसे बेचोगी, मतलब लिपस्टिक और ये सब कलर कहाँ से समझोगी। तो मेरा जवाब ये होता था कि कलर तो हर किसी की अपनी पसंद का होता है, और आप देखिए आपको क्या सूट करता है। मेरे पास जो है मैं वो सब आपको दिखाऊंगी और आप लीजिए, दैट्स योर चॉइस। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी के सामने, तो जैसा अभी हमने समझा कि एक तो अपनी डिसेबिलिटी से रिलेटेड नहीं, डिसेबिलिटी से ऊपर उठ के अपनी काबिलियत को दर्शाना है, उसके बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि
एम्प्लॉयर्स के दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते कई बार, और उन सवालों को समझ के आपने उनका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई इतने अवेयर ना हो, उन्हें ना पता हो कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करूँगी। अगर मैं एक ट्रेनिंग बतौर ट्रेनर फील्ड चुन रही हूँ तो मुझे प्रेजेंटेशंस करनी होंगी, मुझे बहुत सारा वीडियोस दिखाने होंगे, तो मैं उस काम पे, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं उसको करूँगी कैसे। ये क्वेश्चन का आंसर एम्प्लॉयर मुझसे पहले पूछे, मुझे खुद रेडी होना होगा और सॉल्यूशंस मुझे देने होंगे। सेल्फ एडवोकेसी इसको कहते हैं, हमें खुद ही करनी है। जब हम सेल्फ एडवोकेसी करेंगे, जब हम इंटरव्यूअर्स को बताएंगे कि हम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। कोई बंदा नाक की सीध में चलता है, मैं छड़ी लेके टैक्टाइल पाथ को फॉलो करके चलती हूँ। चलते तो हम सभी हैं, जो लोग व्हील चेयर यूजर्स हैं वो व्हील्स पे चेयर यूज करके चलते हैं। काम सेम करना है लेकिन करने का तरीका अलग है। वो क्या आपका अलग तरीका है वो आपने समझाना है। अपनी ग्रूमिंग कीजिए, मेंटर आइडेंटिफाई कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए और शाइन कीजिए एक हीरे की तरह। ये मेरा आपको मैसेज है। और एक शब्द के साथ मैं सबको छोड़ूंगी, एक्रोनिम भी है और शब्द भी है, ट्रू। बी ट्रू, ट्रू इन द रियल सेंस। ट्रू मीन्स ऑथेंटिक, राइट? True means absolutely clearly true, and it stands to my mind for, T stands for take the first step. पहल कीजिए, पहला स्टेप, पहला कदम उठाइए। चाहे आप डिसेबल्ड हैं या नॉन डिसेबल्ड हैं, तभी गैप ब्रिज होगा। डिसेबल्ड हैं तो कदम उठाइए आपको जो चाहिए उसको बताने के लिए और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कदम उठाइए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को अपने साथ लेकर चलने के लिए। R स्टैंड्स फॉर रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब गलती, गिरना, गिर के उठना, उठ के आगे बढ़ना, चलना। तो कभी भी कोई परेशानी आए, कुछ आए, उसे सीख लीजिए, एनर्जी लीजिए और आगे बढ़िए। दिस इज ऑल्सो फॉर डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड। U स्टैंड्स फॉर यूटिलाइज द स्ट्रेंथ्स। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्या करना है क्या नहीं करना है, अरे दिक्कत बहुत आ रही है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आप ये सोचिए कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड E स्टैंड्स फॉर एंगेज विद पीपल विद डिसेबिलिटीज। नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। हमको साथ लेके चलिए, हम ये जर्नी साथ में तय करेंगे। दैट्स माई थॉट। थैंक यू। Wonderful. I think I would like to second all those thoughts, and I would say we as corporates have much more at hand. As someone rightly said that okay, we have a lot of plans on paper, a lot of things we've done, and बहुत सारी चीज़ें जो हमें आगे जाके करनी है. So that's a head start for us, that we just don't have to say, we have to make it happen and give you people a level playing field. But the one word I would like to leave you with, like as she said, be true to yourselves. I would say कि अपने जज्बे को जगा के रखना, that's very, very, very important. I don't know how many of you have seen 12th fail. I saw it last night. And I realized the importance of being, self-motivated and keeping that passion on. So keep that passion and self-confidence on. Everything will fall in place. Yeah? Thank you. Thank you. Vijay, can you hear us? So maybe. I can hear you very well. Can you hear me? Yeah, sure, please. Okay. Well, we've had some very inspiring thoughts by people. Not much to add to that. What I said earlier, I think all of us have to appreciate and have the humility, regardless of where we come from, that each one of us is physically dependent, and it changes as we grow older or when we are small kids. We are dependent physically on other people, and we will eventually. So that keeps happening. Our needs will give way. All kinds of things will happen. This divide has to go away, and we have to appreciate that we are in this together for all kinds of reasons, not out of charity, but out of partnership and inclusivity. So let's try to look at it from that point of view. Thank you. Thank you, Vijay.
And with that, on behalf of Sarthak, I'd like to thank all my panelists for taking out time to be able to be here and share their views. Some very, very notable mnemonics have been formed in my mind. So thank you very much, and thank you, audience, for listening to us. And with that, and even I would like to thank Mansi. Mansi has been so patiently, and for the last, she hasn't even had a second of reprieve. So thank you, Mansi, for translating everything that we are saying here. Thank you. Thank you. Yeah, there's some mementos to be given. Shall I? I have to give